एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा फैशन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस आई लुक को क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि आई लुक बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा कम टाइम में आप इसे क्रिएट कर सकते हो। एंड ये जो है ये काफी ज्यादा कम प्रोडक्ट से आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत ही कम चीजें आपको चाहिए। एंड आप इस आई लुक को आप किसी भी ड्रेस के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप साड़ी पहने हो, चाहे आप सूट पहने हो, चाहे आप गाउन पहनो। मैंने गाउन पहना हुआ है एंड मैं उसके साथ मैं इस आई लुक को क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा मैच कर रहा है। सो आप किसी भी ड्रेस के साथ आप इस आई लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसे ग्रे कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। एंड सब्सक्राइब करना फ्री है, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस, मैंने अपना बेस मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आपको इस आई लुक के लिए आपको चाहिए एक वाटर प्रूफ काजल। मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन की कैलसोल काजल। अगर आपके पास कोई और काजल हो, वाटर प्रूफ काजल हो, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड आपको चाहिए 2 ब्रश। सो एक चाहिए स्मचेस ब्रश एंड स्मच करने के लिए, एंड एक चाहिए ब्लेंडिंग ब्रश। तो आपके पास अगर स्मचर ब्रश ना हो तो आप इसके लिए आप कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इससे आप अपने काजल को स्मच कर चाहिए। एंड आपको एक आई शेडो पैलेट चाहिए। सो मैं यूज करूंगी, मेरे पास है मॉर्फी के जैकलिन हिल पैलेट, तो मैं इसे यूज करूंगी। एंड अगर आपके पास पैलेट ना हो तो आपको सिर्फ ब्लैक कलर एंड आपको ब्राउन शेड चाहिए। सो अगर आपके पास आई शेडो पैलेट ना हो तो आपको ये 2 कलर आपको चाहिए, तो आप ये दोनों कलर आप ले सकते हो। एंड आपको पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। मैंने किया है, बिकॉज अगर आप सेट कर लेते हो तो आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ज्यादा खिल के आता है। एंड अगर आप पाउडर यूज करते हो तो आपको ब्लेंडिंग करने में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना आई लुक। सेम काजल आपको लोअर लाइन पे एंड आपको क्रीज लाइन के नीचे आपको इसे अप्लाई करना है। सो मैं अपने दोनों आईलिड पे इसे अप्लाई कर लूंगी। बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आप अपने आईलिड पे अप्लाई कर सकते हो। एंड अब मैं इसे करूंगी स्मच करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्मचर ब्रश। आप अगर आपके पास ना हो तो आप ईयरबड यूज कर सकते हो। ये जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप इसे बहुत जल्दी करें जिससे ये ड्राई ना हो पाए। अपना जो आई काजल है उसे अच्छे से स्मच कर लिया है, ये आप देख सकते हो। अब मैं यूज करूंगी ब्लैक आई शेडो तो करूंगी। एंड इस ब्लैक मैट आई शेडो को आपको फिंगर की हेल्प से आपको अपनी ब्लैक काजल पर आपको इसे लगाना है। एंड मैं फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करूंगी।
एंड अब मैं यूज करूंगी ब्लेंडिंग ब्रश। तो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं एक ब्राउन शेड पिक करूंगी एंड ये हमारा ट्रांजिशन शेड होगा। मैं एक मैरून शेड ले रही हूँ, बिकॉज मेरा जो ड्रेस है मैं उस कलर का ट्रांजिशन शेड यूज कर रही हूँ। सो गाइज अब मैं यूज करूंगी मस्कारा। सो मस्कारा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबेलिन के हाइपर कलर मस्कारा। ये है मेरा फाइनल लुक।